Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear listeners, viewers, and students. Welcome to NM Language Academy. This is Nadia Malik with today's lecture. Dear students, in today's lecture, we are going to discuss the language of film regarding your course, Emerging Forms of Literature. And this is part 2. First, we see the examples of film language. First is narrative. What is meant by narrative? Liner, flashback, dialogue, characters, act structure, plot, theme. तो ये तमाम एलिमेंट्स जो है वो किस चीज़ का पार्ट होते हैं? नैरेटिव का। नेक्स्ट हमारे पास है mise en scene, कॉस्ट्यूम, लाइटिंग, मेकअप, स्टेजिंग, ब्लॉकिंग, कलर के कैरेक्टर्स के जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो कैसे होने चाहिए, लाइटिंग किस तरह की होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सीन एंड कैरेक्टर, स्टेज किस तरह से होनी चाहिए, कलर कौन से यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सिनेमैटोग्राफी, क्लोज़अप, मीडियम शॉट्स, लो एंगल शॉट्स, एस्टैब्लिशिंग शॉट, जूम, वाइड एंगल लेंस, शॉट, रिवर्स शॉट। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिंग, कट, वाइप, मॉन्टेज, वाइप, रिदम, साउंड, साउंड ट्रैक, साउंड ब्रिज, म्यूज़िक। तो एडिटिंग में हमारी ये सारी चीज़ें जो है ये सारे पॉइंट इंक्लूड होते हैं रिगार्डिंग द लैंग्वेज ऑफ फिल्म। Cinematic language. Cinematic language is the methods and conventions of cinema that are used to communicate with the audience. This is often also referred to as visual storytelling. Although this is only one part of cinematic language. कि सिनेमैटिक लैंग्वेज से मुराद क्या है? वो कन्वेंशन हैं, वो मेथड्स हैं जो आप यूज़ करते हैं थ्रू विजुअल टू टेलिंग द स्टोरी। यानी जो विजुअल मेथड्स उस स्टोरी को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उसी को हम सिनेमैटिक लैंग्वेज कहते हैं। आर द लैंग्वेज ऑफ सिनेमा आर फिल्म। Emotions and ideas are expressed in cinema visually through all types of techniques such as lighting, performance, mise en scene, cinematography, editing and more. अगर किसी कैरेक्टर के इमोशन को एक्सप्रेस करना होता है सिनेमा में तो वो किस तरह से एक्सप्रेस होते हैं? वो वर्ड्स के थ्रू जस्ट एक्सप्रेस नहीं होते बल्कि लाइटनिंग के थ्रू एक्सप्रेस होंगे, जो परफॉर्मेंस होगी कैरेक्टर की उसके थ्रू होंगे, एडिटिंग के थ्रू होंगे, किस तरह का म्यूज़िक वहाँ पे यूज़ किया गया है, रिदम किस तरह की है। When understanding cinematic language, it is useful to consider the convention of literature that are used to convey meaning and communicate with the reader. For example, literature often uses literary techniques such as symbolism or narration to portray meaning and communicate plot, characterization or themes. तो यहाँ पे कंपैरिजन है कि जिस तरह हम लिटरेचर में देखते हैं डिफरेंट जो लिटरेरी हमारे पास जॉनराज हैं जस्ट लाइक ड्रामा, नॉवल और पोइट्री, तो उसमें जो हमारे पास राइटर होता है वो
इमोशन को कन्वे करने के लिए क्या करता है, सिंबलिज्म को यूज़ करता है, अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए, उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए। तो लेकिन जो सिनेमैटिक लैंग्वेज होती है उसमें क्या किया जाता है, टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं इंस्टेड ऑफ वर्डिंग और अदर थिंग्स। द सेम इज़ डन इन स्क्रीन राइटिंग बट विद सिनेमैटिक टेक्निक्स। अब स्क्रीन राइटिंग में भी ऐसा ही होता है कि जो उस फिल्म को लिखने वाला है या जो उसको डायरेक्ट करने वाला है वो क्या चीज़ कन्वे करना चाहता है, लेकिन जो वो दिखाना चाहता है ऑडियंस को वो सिनेमैटिक टेक्निक के ज़रिए दिखाएगा। यू आर सीइंग इट ऑल इन योर माइंड्स आई, you are inferring it, and this is the fourth aspect of cinema that's so special. अब infer का क्या मतलब होता है, infer का मतलब होता है you are shown an image instead of wording। आपको एक इमेज दिखाया जाता है और आप उससे गेट करते हैं कि ये क्या कैरेक्टर है और इसका रोल क्या है। तो सिनेमा में भी यही चीज़ दिखाई जाती है, दैट इन्फेरेंस द इमेज इन द माइंड्स आई, कि जैसे ही आप उस इमेज को देखते हैं तो आपके माइंड में भी उस कैरेक्टर के हवाले से एक इमेज बन जाता है। फॉर मी इट्स वेयर द ऑब्सेशन बिगन, इट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग, इट नेवर फील्स टू एक्साइट मी बिकॉज यू टेक वन शॉट यू पुट इट टुगेदर विद अनदर शॉट। क्या आप एक सीन देखते हैं, फिर आप क्या करते हैं, नेक्स्ट जो सीन होता है उसका इमेज खुद ब खुद आपके माइंड में बन जाता है, एंड यू एक्सपीरियंस अ थर्ड इमेज इन योर माइंड्स आई दैट डजंट रियली एग्जिस्ट इन दोज टू अदर इमेजेस, कि इनके दरमियान एक तीसरा इमेज भी आपके माइंड में बनता है जो एक्चुअली आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया। तो ये परफेक्शन होती है उस फिल्म को पोर्ट्रे करने में, उस डायरेक्टर को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए कि उसने किस तरह की टेक्निक यूज़ की हैं कि आपके माइंड में खुद ब खुद इमेजेस जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं रिगार्डिंग दैट कैरेक्टर। And that has been called appropriately, I believe, film language। और इसी को हम फिल्म लैंग्वेज कहते हैं कि एक चीज़ आपको नहीं दिखाई गई लेकिन आपके माइंड में उसका इमेज क्रिएट किया गया है, एंड दिस इज़ कॉल्ड टेक्निक, फिल्म लैंग्वेज टेक्निक। कैमरा फ्रेमिंग, अ कैमरा एंगल एंड फ्रेमिंग can tell us how to feel about a character. For example, if the camera is looking at a character from a low angle, it shows the character is important or powerful. If the camera is looking from a high angle, it can show the character is small and weak. Next is movies depend on light. Movies provide an illusion of movement. Movies manipulate space and time in unique ways. Movies light. Light is the essential ingredient in the creation and consumption of movies. Movie production crews, including the cinematographer, gaffer, the best boy, and assorted groups of assistants devote an impressive amount of time and equipment to illumination, design, and execute. Light is more than a source of illumination. It is a key formal element that film artists and technicians carefully manipulate to create mood, reveal character, and convey meaning। कि लाइट जो है वो एक मेजर एलिमेंट है इन फिल्म लैंग्वेज, कि लाइट के थ्रू बताया जाता है कि कैरेक्टर जो है वो किस टाइप का है, उसका मूड कैसा है।
Essential element. Light is the essential element in the creation and consumption of motion pictures. Light is a source of illumination and a key formal element manipulated to create mood, reveal character, and convey meaning. Lightning crafted interplay between motion picture, light, and shadow, lighting, and color. A dark and dull setting can tell us that we should feel tense or scared. कि अगर डार्क और डल किस्म की लाइट है तो हम समझ सकते हैं कि कोई टेंस किस्म का सीन और कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है. और a light and colorful setting can tell us to feel happy and warm. और हमें अगर एनर्जेटिक बनाना है, पुरजोश बनाना है, तो उसके लिए क्या है कि कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, एनर्जेटिक है, तो उसमें क्या दिखाया जाएगा, कलरफुल सेटिंग होगी और लाइटनिंग भी उसके अकॉर्डिंग होगी. परफॉर्मेंस of an actors is the key to understanding their emotions throughout a film. They can communicate this in a number of ways. Through facial expressions, body language, space, and tone, the writer might typically convey this intention through stage direction or parenthetical. Screenplay writing. When writing a screenplay, cinematic language is a principle you should always have at the forefront of your mind. Camera directions and editing techniques are not explicitly your responsibility to write about, but cinematic language should be at the core of your screenplay. Cinematic language in a screenplay, you can watch this picture and try to understand what type of scene is shown here, what is meant by that. इस पिक्चर को आपने देखना है और ख़ुद मीनिंग गेट करना है, और यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके आपने ख़ुद जो है वो एनालिसिस करना है, और नेक्स्ट जो स्लाइड है वो आपने बाद में देखनी है. पहले इसका क्या करना है, ख़ुद ही एनालिसिस करना है कि इसमें क्या दिखाने की कोशिश की गई है. The film is entirely in black and white apart from this scene. The red coat therefore stands out. The young girl in the red coat is framed to be small and innocent against the heavy backdrop filled with masses of people. It's used as a way to symbolize hope, innocence, and vitality amid so much death and destruction. कि इस पिक्चर में ये जो किसी फिल्म का एक सीन है, क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि बैक साइड पे हमें सब ब्लैक नज़र आ रहा है. ब्लैक कलर इज़ इंडिकेटिंग द डिस्ट्रक्शन एंड हार्मफुल सिचुएशन ऑल अराउंड. हमें डिस्ट्रक्शन दिखाई जा रही है, लेकिन थोड़ा आगे एक गर्ल दिखाई गई है जो कि रेड कोट में है और इनोसेंट है. ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये जो रेड कोट है और वो जो चाइल्ड है, वो जो गर्ल है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ होप, ऑप्टिमिज़म. कि ऑप्टिमिज़म दिखाई गई है, इसमें उम्मीद को दिखाया गया है कि तमाम तर तबाही के बावजूद भी उम्मीद अभी बाकी है. Okay, dear listeners and students, this was your second lecture regarding the language of film. Inshallah, we will see in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.